Good morning, students. Welcome to the biology class. How are you all, guys? Hello, everyone. Hello, Parth, Anuja, Siddhi, Ruchika, Vinod, Anshul, Pranav, Khushi, Arya, Sandhya is also there. Samiksha, Chetrali, Karthik, and Preeti. I hope all of you are doing fine. Yes, and enjoying your studies also. Very good. अच्छा, let me announce one thing. संडे को आपका एक टेस्ट होने वाला है, राइट? ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, राइट? सो इस टेस्ट के अंदर सिलेबस विल बी एनिमल किंगडम टिल पाइसीज. आज जितना हो जाएगा ना, राइट, कंप्लीट पाइसीज, वहां तक आपके टेस्ट में आने वाला है, राइट? पीपल वर आस्किंग यस्टरडे कि सर कितना सिलेबस है, कहां से आएगा. Hello Purva, Sujit, and it is Tejaswini, I guess. Okay. Yes. So syllabus is clear now. कहां तक आने वाला है? Starting from invertebrata till Pisces. Okay. Yes, Pisces complete आएगा आपका. आज और कल में पूरा फिनिश हो ही जाएगा Pisces. चलो, अब दूसरी बात. Many people were asking कि सर स्टेट बोर्ड में से आएगा या फिर एनसीईआरटी में से आएगा. तो लेट मी क्लेरिफाई दिस पॉइंट. आप एनईटी की तैयारी कर रहे हो, राइट? एनईटी में सिर्फ टॉपिक दे दिया जाता है. फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम. अब एनिमल किंगडम का जितना मटेरियल आप प्रिपेयर कर पाओ, यू हैव टू बी ऑलराइट, यू हैव टू प्रिपेयर दैट मटेरियल. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जस्ट एक आउटलाइन सिलेबस होता है, ठीक है? उसमें ये सारा डिटेल नहीं बताया जा सकता कि अच्छा ये चीज ही पूछी जाएगी. नो, आप जितनी वास्ट स्टडीज कर पाए, जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाए, गुड फॉर यू. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पास थोड़ी ना होना है कि फर्स्ट क्लास हम पास हो गए. नो, आपको मेरिट में आना है, राइट? पूरे इंडिया में सारे बच्चों से अच्छे मार्क्स लाना है. मेरिट में आओगे तभी आपको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है, ठीक? तो आई होप दिस डाउट इज क्लियर कि कितना आएगा, कहां से आएगा. नो, आपको टॉपिक दे दिया है किंगडम एनिमेलिया. अब नाउ आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो, क्लासरूम नोट्स, रेफरेंस बुक, राइट, क्वेश्चन बैंक, जो आप सॉल्व कर सकते हो वो सब आपको करना है, ठीक है? सो इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड. ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको फर्स्ट क्लास पास नहीं करना है, हमको मेरिट में आना है, ठीक है? और उसके लिए जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि आपको पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं. चलो जी, तो आई होप दिस इज क्लियर. ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट Pisces. In the last class we have studied about the important characteristic features of superclass Pisces, right? Now today we will study the classification part of Pisces and each class in detail. So in the flowchart also, if you remember, I have told you about the 3 different classes of superclass Pisces. What were these? Number 1, okay, now I'm writing classes. Okay, so number 1 was placodermi, right? Number 2 is chondric thighs, and number 3 is ostic thighs, right? So these were the 3 classes of superclass Pisces. Now we need to study them in detail, their special characteristic features. Starting with placodermi. Placodermi is the extincted class. मतलब इसके सारे मेंबर extinct हो चुके हैं, एक भी मेंबर अलाइव नहीं है. तो इसका हमको ज्यादा डिटेल अभी नहीं पढ़ना है, right? Now chondric thighs and ostic thighs, right? These two are having so many live members. तो इनको हमको थोड़ा डिटेल में
पढ़ना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लैकोडर्माई इन शॉर्ट. नाउ वीडियो अटक रहा है. अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, एवरीथिंग ऑडियो एंड वीडियो फ्रॉम माय साइड. Are you getting my audio and video? That is fine. Yes, quickly reply in the chat box. Very good. All right. This Parth Nikam, he is very fast in replying. That's very impressive. Very good. It means class में बहुत attentive है वो. जो भी मैं कुछ बोलता हूँ, immediate response देता है. That's very good, Parth. Brilliant. All is clear? Very good. Very good. Okay. So now let us discuss about the placoderma. मैंने बोला था आपको the golden rule कि आपको meaningful words में बड़े से word को break करना है, बड़ी term को break करना है. Placoderma, which means derm, skin के ऊपर plates होंगी. कौन सी plates? Bony plates. All right. So their body is covered with bony plates. That's why the name of class is placodermae. Okay. Yes. So they will be having bony plates. They were having bony plates on their skin. Okay. सर कैसे पता चला? लिविंग मेंबर तो एक भी नहीं है. फॉसिल्स, इसके फॉसिल्स हमको मिले, उनकी स्टडी करने के बाद पता चला कि their body is covered with bony plates. That's why the name is given placodermae, right? Exactly. And the example of placodermae is clematius. Okay, that is example I'm writing clematius. Okay, क्योंकि इसके ऊपर bony plates हैं. That's why the common name of clematius is known as armored fish, right? Armored fish. जैसे पहले डिफरेंट जो लड़ाइयां होती थी तो उसमें लोग पूरा मेटल का ड्रेस पहन के जाते थे ना, जस्ट लाइक दैट इट इज ऑल्सो लुकिंग लाइक आर्मर्ड फिश. ठीक है, क्लेमाइटियस. ऑलराइट, सो दैट फिनिशेस प्लैकोडर्माई. बहुत छोटा सा था और हमको इतना ही पढ़ना है ये बस, राइट? नेक्स्ट इज chondric thighs. So now let us discuss about chondric thighs. Chondric thighs. They are also known as elasmobranchi. Okay, what do we call them? Their other name is elasmobranchi. तो अगर इस नाम से क्वेश्चन में लिखा है तो डोंट बी कंफ्यूज, इट इज आस्किंग अबाउट chondric thighs. Elasmobranchi. Okay, now sir, why the name chondric thighs is there? Ichthyes means fishes, everyone knows, and chondrin means cartilage. Okay, so their endoskeleton is made up of cartilage, right? Yes. Everyone knows about cartilage. What is the difference between bone and cartilage? Bone is more stronger, hard, whereas cartilage is quite flexible. All right, and there are different composition of bone and cartilage. Bone mainly consists of inorganic material, all right, whereas cartilage is mainly made up of organic material. Sugars, proteins are present. ठीक है? All right, so these are the basic differences actually. So in chondric thighs, endoskeleton is made up of cartilage, right? Cartilaginous. Endoskeleton is cartilaginous. And again there is an exception.
यहां पे एक और एक्सेप्शन है, ठीक है। एक फिश ऐसी है जिसका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन नहीं है, ऑलराइट। इसका जस्ट होल्ड ऑन, यस, वेट, just hold on guys. All right, yes, so I was telling you about the exception here. So exception here is chimera, all right, yes, exception is chimera. All right. Now this fish shows some characteristics which are similar to bony fishes, right? So they are placed in chondric thighs, but they shows some characteristic features which are similar to bony fishes. Later on we will discuss, but इसको आप अच्छे से याद कर लो. This is the exception. All right. Okay. Now what else is there in chondric thighs? Basically, they are made up of, their endoskeleton is cartilaginous. Now, next characteristic feature is that they are mostly marine, which means they are found in seawater, right? Okay, so they are mostly marine, they are found in seawater. Then, next is their body is covered with scales. So, scales are their exoskeleton. We have talked about endoskeleton. Now exoskeleton is also there in cartilaginous fishes, right? And their exoskeleton is made up of scales. Exoskeleton is made up of scales. अब फिशेस के अंदर स्केल मिलते हैं, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था. हमको यहां पे देखना है कि कॉन्ड्रिक थाइस में कौन से टाइप के स्केल्स मिलते हैं, ठीक है. तो यहां पे प्लेकॉइड स्केल्स मिलते हैं. एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स. ऑलराइट, यस, these scales, placoid scales, are just like comb. ऐसे होते हैं. राइट, आपने देखे होंगे फिशेस के ऊपर. This type of scales are present on chondric thighs. ठीक है? Have you seen this type of scales? सब लोगों ने फिश तो देखी है. Preeti, yesterday I have told you that operculum is not present in chondric thighs, but again exception is there, right? Okay. So have you seen these type of scales, बच्चों? Very good. That's very good. Brilliant. So their body is covered with placoid scales. आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि वहां आगे जाके ऑस्टिक थाइस में साइक्लॉइड एंड गेनॉइड स्केल्स आएंगे. ठीक है, तो प्लेकॉइड किस में मिलते हैं? कॉन्ड्रिक थाइस में मिलते हैं. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, these fishes does not have operculum, with exception, right? But generally they do not have operculum, so their gill slits are open. ठीक है, आपने शार्क देखी है, शार्क के लेटरल साइड में, ठीक है, ऐसी होती है शार्क. यहां पे gill slits होते हैं. Have you seen these gill slits, everyone? Yes, right?
So number of gill slits here are 5 to 7 pairs. 5 to 7 pairs of gill slits are present. मतलब कॉन्ड्रिक थाइज में ज्यादा नंबर है, वहां पे ऑस्टिक थाइज में ये नंबर कम होगा. ठीक है, ऑल राइट. Then operculum is not found, but operculum is there in chimera. I have already told you. This is the exception. Then next is their mouth is ventral actually. Absolutely right, Nikam. Parth Nikam. You have written your surname first, that's why already I call you Nikam. Okay. So let me draw a diagram of marine fish. It looks like this. Right? So chondric thighs look like this. Position of mouth is ventral and in bony fishes it is terminal. Right? आप सबने देखा होगा bony fish को, उसका माउथ जो है टर्मिनल होता है, but here it is ventral, नीचे की साइड होता है. ठीक? Then open gill slits are there because no operculum is there. Operculum होता ही नहीं है. ठीक? टेल की बात करें तो टेल जो है वो सिमेट्रिक नहीं होती. दिस टाइप ऑफ टेल इज नोन एज हेटेरोसर्कल टेल. हेटेरोसर्कल टेल. जबकि बोनी फिशेस में इट इज सिमेट्रिक. ये बिल्कुल सिमेट्रिक होती है लाइक दिस. यस, दिस इज होमोसर्कल टेल फाउंड इन ऑस्टिक थाइस. But here in chondric thighs, heterocircle tail is present, right? All right. Moving on to the next point, they don't have any air bladder. I have already told you कि इनके अंदर air bladder नहीं होता है, इसीलिए इनको continuously swim करना पड़ता है, otherwise ये sink कर जाएंगी. ठीक है, यस. जबकि ऑस्टिक थाइस में एयर ब्लैडर था तो उनको कंटिन्यूअसली स्विम करने की जरूरत एज सच नहीं होती. ठीक. दूसरा, इनकी बॉडी ऐसे डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है. ठीक है, ऐसे. राइट, जस्ट टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस इन वाटर. जबकि ऑस्टिक थाइस लेटरली फ्लैटेंड होती है. सबको पता है ऐसा, राइट? सबने देखा है. मरीन फिशेस कॉन्ड्रिक थाइस ऐसी होंगी और ऑस्टिक थाइस ऐसे फ्लैटेंड होंगी, लेटरली फ्लैटेंड होंगी. सो देयर बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड. डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड. राइट? Yes, we are coming on to the example. First, let us complete the points actually. Now, another important characteristic feature is that in chondric thighs, intestine के अंदर एक spiral valve होता है. Spiral valve. Spiral मतलब ये intestine है, right? अगर इसको यहां से कट कर दें तो आपको अंदर एक ऐसा स्पाइरल वॉल मिलेगा. ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस पॉइंट हियर. इंटेस्टाइन इज हैविंग स्पाइरल वॉल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्पाइरल वॉल? इट मैक्सिमाइजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. देखो यहां पे ऐसे फोल्ड्स बन गए ना स्पाइरली, तो ये फोल्ड्स जो है सरफेस एरिया बढ़ा देंगे अब्जॉर्प्शन के लिए. राइट?
So that's why it increases absorption of food in intestine. They are present in chondric thighs. They are not found in osteoid thighs. All right. Yes, they predate on other organism, other fish. All right. Yes, that's why. Now, next is their head is having a special structure which senses the temperature. पानी का टेम्परेचर ये अपने हेड के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उससे सेंस कर लेते हैं कि ठंडा है, गर्म है, इस पानी में आगे बढ़ना है या वापस चले जाना है, राइट? सो दैट स्पेशल ऑर्गन फॉर सेंसिंग द temperature is known as ampulla of Lorenzini. What do you call this? This is called as ampulla of Lorenzini. Where it is situated? It is situated on the head of chondric thighs. ठीक है? अब ये क्या सेंस कर रहा है? टेम्परेचर सेंस कर रहा है. So can we call it a thermoreceptor? Absolutely, बिल्कुल बोल सकते हैं. So it is thermoreceptor, right? Exactly. Then about tail, I have already told you that their tail is heterocercal, not symmetric. Now, next is that they have a common opening actually. Common opening here. Common opening for genital tract and urinary tract and digestive tract. सबकी एक common opening. तो अभी तक हम क्या बोलते आए थे? एनस. यहां पे हम इस एनल अपर्चर को बोलेंगे क्लोएका. What do we call it? We call it cloaca. ठीक है? So they are having cloaca, the common opening for three systems: genital system, urinary system, and the excretory. Egestion के लिए जो भी digestive waste निकलेगा बाहर, उसके लिए there is a common aperture known as cloaca, right? Okay. So cloaca is there. Coming to the copulatory organ. Yes, they have internal fertilization. Internal fertilization means male will release its gametes inside the body of female. Okay? Yes, that is called as internal fertilization. तो chondric thighs में internal fertilization है. Internal fertilization होने के लिए मेल के पास एक copulatory organ होना चाहिए. Copulatory मतलब जिससे वो गैमीट्स जो है फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर सके, राइट? डिस्चार्ज कर सके. दैट कॉपुलेटरी ऑर्गन फाउंड इन मेल इज नोन एज क्लैस्पर्स, राइट? सो आई एम राइटिंग इट हियर. copulatory organ claspers are present. Claspers are present. So fertilization will be internal. ठीक है? In most of the chondric thighs. सारे नहीं. Again exceptions are there. So fertilization will be internal. Right? अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो ये एग लेइंग होंगे या फिर विविपैरस होंगे. सो मोस्ट ऑफ देम आर ओविपैरस, राइट? एग ले करती हैं, बट सम ऑफ देम आर ओवोविविपैरस आल्सो. ठीक है? दोनों टर्म बताता हूं आपको. मोस्ट ऑफ देम आर ओविपैरस बट सम ऑफ देम आर ओवोविविपैरस. ठीक है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो एग का ही फॉर्मेशन होगा, बट वो एग ओविपैरस में तो बाहर ले कर दिया जाएगा, फीमेल उसको बाहर ले कर देगी. बट ओवोविविपैरस में वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही हैच होंगे, बाहर हैच नहीं होंगे.
और जैसे ही हैच होंगे तो फीमेल की बॉडी से एक यंग वन बाहर आएगा, राइट? तो ऐसा दिखेगा कि उसने यंग वन को बर्थ दिया, इट इज वीवी पैरस, बट नो, इनसाइड देयर वाज अ एग. So that property, that phenomena is ovoviviparous. Example is shark. Shark is the best example of ovoviviparity, right? Yes, definitely. Yesterday I have told you कि birds and mammals, they are homeothermic. Rest all vertebrates are poikilothermic. ठीक है? Yes, ये बात दिमाग में बिठा लो बच्चों. Okay, so about that, internal fertilization is there. Males are having claspers as a copulatory organ. Now, fishes, when embryo is formed, right? जब मेटिंग हुआ, स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए, तो जायगोट बना, जायगोट फर्दर एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो के आसपास प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, इसीलिए जो फिशेस हैं, पाइसीज, दे आर इंक्लूडेड इन anemniotes. Okay, yes, I'm writing it here because amniotic membranes found around embryo are not present in Pisces. They are grouped under anemniotes. जबकि ये मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियो के अराउंड रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में मिलती हैं. इसीलिए रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को एम्नियोट्स बोला जाता है, जबकि फिशेस और एम्फीबियंस में ये नहीं मिलती है, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया? इनको हमने बोल दिया एनेम्नियोट्स, राइट? ओके, सो दैट वाज definitely, yes, they do show metamorphosis, all right? Fingerlings, fry, these are some stages of life of fishes. ठीक है? Fingerlings, fries. Now, that was important characteristic features of chondric thighs. Coming to the examples now. पार्थ निकम का फेवरेट पार्ट, एग्जाम्पल. चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अब. The very first example is scoliodon, right? Example we are discussing scoliodon. It is also known as dogfish, all right, or Indian shark. Dogfish or Indian shark. ठीक है? I'm not writing Indian shark. अच्छा, इसको डॉगफिश क्यों बोला बच्चों? कोई बता सकता है मुझे कि ये तो फिश है, फिर इसको डॉगफिश क्यों बोल दिया? Why? Dog is a mammal actually. उसका फिश से क्या लेना देना है? Yes, anyone is having the answer? No one is giving the answer. Let me give you the answer. Actually, dogs का sense of smell बहुत ही sharp होता है, right? इसीलिए आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे चेकिंग के लिए डॉग्स को रखा जाता है, ट्रेन डॉग्स को रखा जाता है. देयर सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी शार्प. सेम वे दिस डॉगफिश, ऑलराइट, दिस शार्क, the Indian shark is also having very sharp sense of smell. ये पानी के अंदर कहीं पर भी ब्लड फ्लैश सेंस कर सकती है बहुत अच्छे से. That's why the name dogfish is given to scoliodon. All right? Yes. So now you know why it is known as dogfish. Right, Parth? Chalo. Moving on to the next example, that is
zygenina, zygena, and it is hammer-headed shark. Hammer-headed shark. ऑल राइट, आपने देखा होगा इसका जो हेड है वो हैमर की शेप का होता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हैमर हेडेड शार्क. द नेक्स्ट एग्जांपल इज द प्रिस्टीस. प्रिस्टीस, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉफिश. ओके, क्यों सॉ? क्योंकि इसका जो माउथ है, इट इज लाइक दिस, इट लुक्स लाइक सॉ, राइट? इट लुक्स लाइक अ सॉ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज sawfish. Now next example is trigon. It is known as stingray. मतलब इसकी टेल के ऊपर, ऑलराइट, इट हैज अ पॉइजनस स्पाइन. एक पॉइजनस स्पाइन होता है जिससे ये स्टिंग करती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टिंगरे. नेक्स्ट इज टॉर्पीडो. And torpedo is known as electric ray. Why? Because in this fish electric organs are found which are modified muscles actually. ठीक है? These modified muscles can produce shock of around 100 volts. 100 volts जितना shock produce कर सकते हैं. ठीक है? तो आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा कि ये इतना करंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कई बल्ब्स लाइट हो सकते हैं. ठीक है? सो दैट इज टॉर्पीडो, द इलेक्ट्रिक रे. All right, now let us discuss about the exception. Sir, how it the poison of this stingray? How is the poison of stingray? Definitely, मतलब I'm not getting your question, Parth. चलो, note it down, send it on Telegram. Now, let us discuss the exception, chimera, right? Chimera, all right? Chimera is an exceptional chondric thighs. Why? Because it is having operculum on gill slits. All right, that's the structure found in ostic thighs. So that's why chimera is called as connecting link between bony and cartilaginous fishes. Right? Okay. Definitely, Piyush. So chimera is having operculum, and that is the characteristic feature of ostic thighs. That's why this is known as the connecting link between bony and cartilaginous fishes. Okay, and chimera is also known as king of herrings. Why king of herrings? Herring is the school of fishes. सर स्कूल, फिशेस स्कूल जाती है? नहीं, जो ग्रुप होता है फिशेस का उसको बायोलॉजिकल टर्म दिया गया है स्कूल, राइट? तो काइमेरा इज फाउंड इन herrings actually. That's why it is also known as king of herring. Okay? Yes. All right. So that's all about chondric thighs. Now we need to start the next class of Pisces, that is ostic thighs. I hope this much is clear to all of you. Yes? Note down your doubts and send it on Telegram group.
All right, Parth. That's very good. Now, the next class is osteichthyes. All right, which are commonly known as bony fishes. Okay, because their endoskeleton is made up of bone. Endoskeleton is made up of bones. Okay, and there is another term for osteichthyes, that is teleostomi. Teleostomi. जैसे वहां पे इलास्मो ब्रैंकाई था ना, यहां पे टीलियोस्टोमा है, याद रहेगा बिल्कुल. Okay, so they are having endoskeleton made up of bones. That's why oste means related with bone, and ichthyes are fishes. So bony fishes are called as osteichthyes, right? Now, coming to their habitat, they are found in mostly soft water. ठीक है, fresh water, rivers, ponds, lakes, etc. But they are also found in marine water में भी ये पाई जाती हैं. So mostly fresh water, but marine also, marine भी होती हैं, right? Okay. Now coming to their exoskeleton. एक्सोस्केलेटन वहां पे कौन से स्केल का बना हुआ था, जल्दी बताओ. कॉन्ट्रिक्टाइस में कौन से स्केल्स थे बॉडी के ऊपर, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी. वेरी गुड पार्ट, दैट इज प्लेकॉइड. That's very good, brilliant. Very good. Yes, so here the exoskeleton is composed of two different types of scales. Exoskeleton composed of two different types of scale. Number one type of scale is cycloid. ओके, अब साइक्लॉइड है तो डेफिनेटली इसका शेप जो होगा काइंड ऑफ सर्कुलर होगा. यस, इट विल लुक लाइक दिस. all right, so these scales look like this. ये देखे होंगे आपने ऐसे स्केल, जो भी फिश कंज्यूम करते हैं, राइट, जिनको फिश बहुत पसंद है, तो स्केल्स आपने ये जरूर देखे होंगे. एंड दे आर मेनली फाउंड ऑन बोनी फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, राइट. ओके, सो दीज आर साइक्लॉइड. सेकंड इज टिनॉइड और आल्सो नोन एज ganoid scales. Okay, ganoid scales looks like this. ये भी आपने देखे होंगे ऐसे स्केल्स, राइट. सो दे आर आल्सो फाउंड ऑन बोनी फिशेस. सो टू टाइप्स ऑफ स्केल्स, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड. प्लेकॉइड्स आर नॉट फाउंड. प्लेकॉइड्स आर देयर इन chondrichthyes. Okay, so these are the two different types of scales which are there in exoskeleton. Moving on to the next point, coming to their respiration. डेफिनेटली ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ही होगा गिल्स के थ्रू, बट यहां पे नंबर ऑफ गिल्स इज लेस. वहां पे कितना था, 5 to 7 pairs. Here 4 pairs of gills are there. 4 pairs of gills are there. ठीक है, 4 पेयर मिलेंगे यहां पे, मतलब कम. कॉन्ड्रिक्टाइस से लेस नंबर ऑफ गिल्स. Their gill slits is covered by a flap of skin known as operculum. ठीक है, operculum is present in bony fishes.
right? Absolutely right. Then they are also having air bladder. ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, air bladder भी इनके अंदर होता है. Their tail is homocircle. Let me draw the diagram of a ostick thighs. Yes, Purva. Sometimes both or might be different. Different scales are present on different fishes. Okay, so I was telling you about the diagram. They are laterally flattened. Their tail is symmetric, that is homocircle tail. Let me write it here. It is homocircle tail. Tail is also known as caudal fin because it is supported with fins, right? Position of mouth is terminal, जबकि वहां पे क्या था, वेंट्रल माउथ था, यहां पे टर्मिनल माउथ है, ठीक है. Then they are having operculum like this, a flap-like structure which is covering the gill slits. This is operculum, right? Then they are having paired fins, right? In paired fins, pectoral and pelvic fins are there. Here and here, right? And have you seen these lines in the fins? ये line देखी है आपने? These lines are known as fin rays. Okay. So these lines are known as fin rays. Definitely fins helps in swimming. So this is pectoral. This is pectoral. And this is pelvic fin. Okay. These two, pectoral and pelvic, are paired actually. Right? Yes. And they do have unpaired fins like this. This is the unpaired dorsal fin. ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है. Yes, definitely. It is hard. I mean, it is quite thick actually. Okay. All right. Moving on to another unpaired fin. This is again a dorsal fin. Okay. And tail is also supported with fins. So this tail supported with fin is known as caudal fin. All right. Yes. So this is the structure. Again, another fin can be there. This is anal fin. All right. So this is the general diagram of an ostick thighs having different types of fins. Operculum, mouth position is terminal, homocircle tail is there. And other than that, they have a sensory organ. All right, lateral line. This lateral line helps them in choosing the direction while swimming. It also helps in sensing the temperature, water current, etc. So this is lateral line system, the sense organ present in fishes. Okay. All right. So I hope it is clear to everyone. Yes, the general diagram. Okay, very good.
Now coming to the हार्ट, ठीक है। कल मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था, साइक्लोस्टोम्स की। टुडे वी विल डिस्कस द हार्ट ऑफ फिशेस। इट इज टू चेम्बर्ड, देयर हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन ऑरिकल, one ventricle, and there is another chamber. This is deoxygenated blood coming from body. This is oxygenated blood coming from gills, right? Both get mixed here, and then they go to auricle, then ventricle, and ventricle again supply it to different parts of body. Now, because mixed blood is supplied, it is called as venous heart. And the chamber where mixing is taking place, this chamber is known as sinus venosus. Okay, the chamber is called as sinus venosus. All right, this I have already told you. So this is the diagram of heart of fishes, the venous heart. अच्छा, बहुत सारे लोग वीनस बोल देते हैं और स्पेलिंग लिख देते हैं प्लैनेट वीनस वाला। No, it is not. This is the correct spelling. Venous heart. Okay, all right. Now moving on to the next characteristic feature of bony fishes. They don't have ampulla of Lorenzini because they have lateral line system, right? So इनके head के ऊपर ampulla of Lorenzini नहीं होगा, the thermoreceptor, if you remember. Then next point is that they don't have spiral valve also. इनके intestine में spiral valve भी नहीं होगा, right? Okay. Then they are also having cloaca. इनके अंदर भी cloaca मिलेगा, and they don't have claspers. इनके अंदर copulatory organ claspers नहीं मिलेंगे। अब जब copulatory organ नहीं है, मतलब copulation will be external, मतलब there will be no copulation actually. External fertilization will be there. Fusion of gametes takes place outside the body of female, right? And definitely the development is also what we can say indirect. It includes different stages of life, fingerlings, fries, etc., right? And they are oviparous. Okay, but again some of them are ovoviviparous also. Okay, yes. The other characteristic features include they are having 10 pair of cranial nerves. Let me write here. They have 10 pairs of cranial nerve. Now, what do you mean by cranial nerves, बच्चों? Nervous system, everyone knows, right? So nerves are made up of neurons actually, right? The nerves originated from brain are called as cranial nerves, and they have 10 pairs of cranial nerves. How many pairs of cranial nerves? Humans are having 12 pairs. We are having 12 pairs, and they are having 10 pairs. Okay? All right. And another important thing is that they excrete ammonia. So they are ammonotelic actually. They are ammonotelic. They excrete out ammonia. Generally they are fresh water. So fresh water में बहुत सारा पानी available है for the excretion of ammonia. That's why they excrete ammonia. जबकि chondric thighs, they live in salt water. Marine water is salt water ना. That's why वहाँ पे इतना पानी available नहीं होता है. And that's why chondric thighs are ureotelic in nature. They excrete out urea. Here they are excreting ammonia. They are ammonotelic.
Very good, Preeti. Brilliant. Okay. So these are some characteristic features of Pisces. Coming to the example. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. So the very first example is Indian carp, also known as rohu, and the scientific name is Laburohita. Laburohita. This is the scientific name. ठीक है? Written accordingly. Then there is another example commonly known as magur, all right, and its name is Clarius, right, because it looks like it is having the bristles, cirri, okay, and it looks like cat, so commonly it is also known as catfish. Then another example is anglerfish, Laphius. ये तो सबने देखा होगा. All right, your name is खुशी. Okay. मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क दे रहे हो तुम लोग. दूसरे नाम से लॉगिन हो और अपना नाम याद करवा रहे हो. चलो कोई बात नहीं, देखेंगे. Next is anglerfish. कार्टून कैरेक्टर में आपने वो एंगलर फिश देखी होगी जिसके ऊपर एक बल्ब जलता रहता है, राइट? यस, दैट इज द सेम फिश, एंगलर फिश, राइट? उसका कुछ नाम भी है कार्टून कैरेक्टर का, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट इट इज हैविंग नेम आल्सो. सो द साइंटिफिक नेम इज Laphius. Okay, anglerfish. Then moving on to the next example. Next example is hippocampus. Okay, hippocampus. Commonly known as seahorse because it looks like horse. That's why seahorse. Okay, and it swims vertically. ठीक है, ऐसे ऐसे ये swim करता है vertical, and males are having a brood pouch, which means यहाँ पे जो fertilized eggs हैं उनको रखा जाता है और उसके बाद till उनकी hatching care की जाती है. ठीक है, this type of care is known as secondary vivipary. So secondary vivipary is found in hippocampus. All right? Yes, they are having brood pouch. No. Parth, it is not like that. फ्लाइंग फिश बिल्कुल उड़ती नहीं है बच्चों, ठीक है? इसका जो डॉर्सल फिन है, राइट, वो बहुत इलोंगेटेड रहता है जिससे ये ग्लाइड कर सकती है, और ग्लाइड भी अराउंड 100 मीटर 200 मीटर तक ग्लाइड कर सकती है, बट ये फ्लाई नहीं कर सकती है. ठीक है, इसके ग्लाइड करने के नेचर की वजह से ही इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्सोसीटस, known as flying fish. Exocetus, also known as flying fish. All right, yes, so its dorsal fin is elongated, and with the help of that fin it can glide in air. Okay, yes, so these are some
Examples, there are so many examples of ऑस्टिक थाइस. तो बस इतने इंपॉर्टेंट करते हैं. एक और बता देता हूं, गैम्बूसिया. गैम्बूसिया इज लार्वी, इट फीड्स ऑन लार्वे ऑफ मॉस्किटो, सो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, बिकॉज इट फीड्स ऑन लार्वे ऑफ मॉस्किटो. मॉस्किटो को ही खा जाती है. ऑलराइट. But anglerfish is found deep into the sea. That's why it is having the bulb-like structure which produce bioluminescence. क्योंकि वहां पे लाइट तक नहीं होती है. ठीक है. और ह्यूमन वहां पे कैसे पहुंच पाएंगे? So don't worry about that. Okay. Now another group, very important group, ऑस्टिक थाइस के अंदर ही डिप्नोई ग्रुप बोला जाता है इसको. तो वो डिस्कस कर लेते हैं. There is another group in ostic thighs known as dipnoi group, commonly known as lungfishes. Adult form of these fishes are having lungs actually. Okay. So group dipnoi, it includes lungfishes. Their adult will be having lungs, but their immature larval form will be having gills only. ठीक है. Okay, so because they are having lungs और ये fish हैं, इसीलिए इनको uncle of amphibians बोला जाता है, क्योंकि amphibians के पास lungs होते हैं, right, adult stage में, और यहाँ पे fishes के अंदर ही lungs आ गए. That's why they are uncle of amphibians, connecting link between fishes and amphibians, right? Okay. So yes, what I was telling you, they are having 3-chambered heart also, which is again similar to amphibians. Amphibians के अंदर भी 3-chambered heart मिलता है. ठीक है. Then there are 3 different types of lungfishes are found on the basis of country. Country के basis पे हमने इसको divide कर दिया है 3 different type में. Number 1 is South American lungfish. आपको ऐसे ही याद रखना है. Question में ऐसे ही पूछा जाएगा. Which of the following is South American lungfish? Then its name is Lepidosiren. Lepidosiren. Underline it because it's scientific name, right? So Lepidosiren में immature stage में भी lungs ही होते हैं. So it respire only with the help of lungs. No gills are present. Okay. Then next is Australian lungfish. Australian lungfish. This is known as Neoceratodus. All right, and it respires by gills, but it is having single lung. एक lung भी होता है, but that is not functional actually. ठीक है? So it mainly respires with the help of gills. Okay. Now next is African lungfish. And its name is Protopterus. All right. Yes. And in Protopterus, 1 pair of lungs are present, which means 2 lungs are present. So these you need to remember. Dipnoi group of lungfishes, right? Okay, so that finishes your complete super class Pisces. यहां तक टेस्ट में आने वाला है. Okay? Yes. So any doubt, any question? Telegram group is there. You can ask. You have time. अच्छे से तैयारी करो और अच्छा स्कोर करो. ठीक है?
चलो तो आज अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू।